हेलो एवरीवन। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या है? जो गिब्स एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं एच माइनस टी एस। क्या है गिब्स एनर्जी? बस एक मैथमेटिकल पेपर पर डेरिवेशन है और इसका डेरिवेशन एक एनर्जी है जिसका डेरिवेशन है एच माइनस टी एस। कोई कुछ गिब्स एनर्जी का इसका कोई फील नहीं है, बस ये एच माइनस टी एस, बस यही है। अच्छा ठीक है, अब इसको देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं। फॉर्मूला तो नहीं, अब इसमें कुछ कुछ करके देखना है क्या क्या आता है। अब हम देखते हैं कि हम एच को, हमें पता है कि एक चीज़ की एच इज़ इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। तो हम गिब्स एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं यू प्लस पी वी माइनस टी एस। अब हम फॉर अ चेंज देखें, अगर हम चेंज कर रहे हैं ए से बी स्टेट पे जा रहे हैं तो क्या होगा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब हम डी यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू प्लस वर्क डन बाई पी वी। पी वी वर्क हम लोग जनरली लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेन आएगा जो है नॉन पी वी। यहाँ पे नॉन पी वी वर्क भी हम लोग कंसिडर करते हैं, नॉन पी वी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस, अरे सॉरी डी यू नहीं, क्यू प्लस वर्क डन बाय पी वी प्लस वर्क डन बाय नॉन पी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस minus s dt. So we can write it as this also. Okay, now we are taking एक ऐसा, कैसे बोले इसको? Okay, now we are taking a state where pressure comma temperature is constant and there is absence of नॉन पी वी वर्क। टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म ज़ीरो, प्रेशर मेरा कांस्टेंट है ये वाली टर्म ज़ीरो, और हम वर्क डन बाई पी वी वर्क को हम और क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाई पी वी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डी वी फॉर रिवर्सिबल के लिए। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो मेरा ये आ गया डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्यू, वर्क डन बाई नॉन पी वी हम एब्सेंस किया तो ये भी कैंसिल, माइनस टी टी एस। और चेंज भी नहीं हो रहा, फॉर नो केमिकल और फेज, नहीं इसको रहने देते, अभी इसको भी रहने देते हैं, ये चीज़ नहीं होगा यहाँ पे, गड़बड़ लिख दिया। तो हम डी जी को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस टी डी एस। ठीक है, ओके। अच्छा एक और चीज़ हम बताते हैं आपको, अगर हम देखें एंट्रोपी को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू रिवर्सिबल बाई टी। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? क्यू रिवर्सिबल बाई टी। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ, अच्छा तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अगर हम सराउंडिंग देखें, ये क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी। अब हम ये क्यू ऑफ सिस्टम को क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू नेगेटिव बाई टी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इनटू टी। तो यहाँ पे ये जो है क्यू सिस्टम वो यही है। और एक और चीज़ आपको, हाँ चलिए इसको बता दें, फिर इसको उसको रहने पहले एक बता दी कि किसके लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल
for real, ideal and solid लिक्विड, ये हर चीज़ के लिए मेरा एप्लीकेबल होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस, क्यू सिस्टम मेरा क्या है, नेगेटिव ऑफ टी सराउंडिंग बाई टी। अब हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो डी जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टी सराउंडिंग इनटू टी माइनस टी इनटू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो डी जी इज इक्वल्स टू माइनस टी टी सराउंडिंग प्लस डी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग माइनस प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो डी जी इज नेगेटिव ऑफ टी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी प्रोसेस तभी होगा जब जिससे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। कोई भी प्रोसेस तभी फिजिबल होगा जब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कोई भी प्रोसेस अगर हमें फाइनाइट समय में करना है, इरिवर्सिबली करना है, रिवर्सिबली नहीं करना है, तो हमें यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ानी होगी। हम ये हाथ क्यों हिला पा रहे हो, क्योंकि इससे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। अगर इससे यूनिवर्स की एंट्रोपी घटती तो हम तो हाथ हिला ही नहीं पाते। अगर ये ज़ीरो कब होगा, जब रिवर्सिबली हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब क्या कहें, फिर इनफाइनाइट टाइम लगेगा चेंज होने में। ठीक है, अगर हम ये देखें तो चेंज इन एंट्रोपी ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो डी क्या आएगा। अगर हम डी को देखें, चेंज इन गिब्स एनर्जी, डी शुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। डी जब भी हमेशा, इसका मतलब क्या निकलता है बताइए। इसका मतलब ये निकलता है कि हमेशा गिब्स एनर्जी जहाँ पे डिक्रीज होगी वो प्रोसेस फिजिबल होगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ निकाल सकते हैं। चेंज इन गिब्स एनर्जी जब इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा। इक्वल कब होगा, जब आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये लेस देन ज़ीरो कब होगा, जब आएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ग्रेटर देन ज़ीरो कब होगा, ये हो ही नहीं सकता है। अरे भाई गिब्स एनर्जी बढ़ेगी मतलब ये वाला चीज़ पॉजिटिव आएगा, ये वाला होल चीज़। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। यूनिवर्स की एंट्रोपी घटेगी तो प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। Okay, now we're moving forward. वो ठंडी का समय आ रहा है, ठंडी में मस्त पढ़ाई होगा। एकदम आराम से बैठ के चादर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के बढ़िया पढ़ाई एकदम होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कंडीशंस बनाते हैं जिससे हम गिब्स एनर्जी चेंज निकाल पाए। सबसे पहला कंडीशन,
no chemical or phase change at constant temperature pressure. हाँ ठीक है, अब जो अभी इसको छोड़ते हैं, नो केमिकल और फेस चेंज हो रहा है, तो हम डी जी को क्या लिखते हैं? डी जी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, डी जी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क डन बाई पी वी प्लस वर्क डन नॉन पी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ये पी वी से ये पी डी वी कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सोचे और क्या क्या काट सकते हैं। और अगर हम लोग देखें इसको, हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़ क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो क्यू इज इक्वल्स टू टी डी एस। तो अगर हम इससे देखें तो ये भी काट सकते हैं, क्योंकि ये टी डी एस माइनस टी डी एस। अब हम कंसिडर करते हैं कि नॉन पी वर्क हमारा सिस्टम नहीं कर रहा है, तो ये भी कटा। तो मेरे पास आ गया डी जी इज इक्वल्स टू क्या बचा है, वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, अगर हम देखें सबसे पहला अब कंडीशन बनाते हैं। आंटी आज नहीं, अब हम सबसे पहला कंडीशन बनाते हैं केस वन। केस वन में हमारे पास क्या है कि हम लेते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। और ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल, क्योंकि वर्क डन हम लोग हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में देखें तो वो होता है माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। माइनस इस पे आ गया, ये उल्टा हो गया, बस यही है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया डेल्टा जी का। अब हम केस टू लेते हैं। केस टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर पे ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरा आ जाएगा डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। अब हम लोग एक इसका दूसरा केस लेते हैं, जब फेस और केमिकल चेंज मेरा हो रहा है। when phase and chemical change is taking place, then Gibbs energy is equals to H minus Ts, and at constant temperature,
delta HR minus temperature is constant, delta HR. This is the formula we will apply when we have to change the when we have to take out the change in Gibbs energy at when the reaction is taking place. Okay, let's do some questions. कंडीशंस, ये कंडीशंस ही काफ़ी मुश्किल है. कंडीशंस कौन सी कंडीशंस कब लगेगी, कौन सी कंडीशंस कब लगानी है. चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, बाद में आना जाओ. चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं. एक रिएक्शन गिवन है N2 in gaseous plus 2O2 gaseous gives 2NO2 gaseous. ठीक है, अब हमें इसका दिया है एंट्रोपी इज इक्वल्स टू 100 जूल पर केल्विन पर मोल. एंट्रोपी ऑफ O2 is equals to 125 joule per Kelvin per mole. Entropy of NO2 is equals to 150 joule per Kelvin per mole. हाँ, ये किस पे है? At 1 atm 300 Kelvin. अब हम देखते हैं. हाँ, और हमें दिया है change in enthalpy when a reaction takes place which is equals to 50 kilojoule per mole, and Cp of N2 is equals to Cp of O2 is equals to 20 joule per Kelvin per mole, और Cp of NO2 is equals to 25 joule per Kelvin per mole. Okay, this question is many part. The first part is that we have to find the change in Gibbs energy when a reaction take place. This reaction take place at 1 atm 300 Kelvin. Okay, this is the first part. As we know that this formula change in delta GR is equals to delta HR minus T delta SR. So we have given we have the entropy at 1 atm 300 Kelvin. In the last previous video we have discussed how to find the change in entropy during a reaction, which is equals to 2 into NO2, entropy of NO2 150 minus 2 into entropy of O2 125 minus entropy 100, which is equals to 300 minus 250 minus 100, which is equals to minus 50. You may think that the entropy is negative here. How the reaction can take place? Remember that entropy of universe should increase. This is the entropy of only reaction, not the surrounding, only the system. The system, the change in entropy of system is negative, but the overall change will be, it's damn sure that it will be positive. Then only the reaction will take place. Okay,
Remember this data because this data will be used in many parts. I'm going to rub it. We have the entropy at 1 atm 300 Kelvin, which is equals to minus 30. We have the change in enthalpy. This is also at 1 atm 300 Kelvin. Let me check. Am I right? Yeah. It will be 50 minus T. What is temperature? 300 Kelvin. We are taking out in this part 300 Kelvin. Change in entropy was minus 50, and this is in kilojoule, and all the data here are in joule. So we will divide by 1000, which will be equals to 65. Okay, this part is done. Let's move on to the next part. Next part is at 1 atm 600 Kelvin. 1 atm 600 Kelvin. So we have to change the data of entropy, the delta of HR in the data law of enthalpy at 600 Kelvin. We have given at 300 Kelvin 1 atm, 300 Kelvin 1 atm. We have to change it. The first let's find the change. What happened to me? We have the formula here. Delta GR is equals to delta HR minus T delta SR. Let's find first for delta HR. Delta HR is equals to here pressure is temperature is changing, so it will be delta CPR T2 minus T1, because delta G and CP delta D. Yes. What is the delta CPR? Yes, delta CPR. Let's calculate delta CPR, which it is equals to 2 into 25 minus 3 into 20, which is equals to minus 10. Minus 10. Change in temperature is 600 minus 300, which is equals to negative of 3000. Okay. Delta HR at T2 minus T1. So delta HR at T2 minus delta HR at T1. T1 here is 300 Kelvin. So change in enthalpy at 600 Kelvin is equals to enthalpy at 300 Kelvin is 50. 50 minus 3000 upon 1000, because it is in kilojoule, which is equals to 47 kilojoule per mole. Okay. Enthalpy, change in enthalpy at 600 Kelvin. Let's find the change in Gibbs energy. No, sorry, change in enthalpy at 600 Kelvin. Change in enthalpy at 300. 600 minus change in enthalpy at 300, which is equals to delta CPR ln T2 by T1. We have delta CPR minus 10 ln T2. T2 is 600, T1 is 300, ln 2, and delta change in entropy at 600 minus entropy at 300. We have entropy at 300, which is minus 50. In the last part we have calculated it at 600 Kelvin, which is equals to minus 50 minus 10 ln 2. Okay, now we have the change in enthalpy and change in entropy at 600 Kelvin. So now we can put it in the formula. Change in Gibbs energy, which is equals to 47 minus what is the temperature, 600, into minus 50 minus 10 ln 2 upon
1000 to convert it into kilojoule. Okay, we got it right. Let's move on to the third part. These questions are sort of a medium type, not very hard, not very easy. What happened? Yeah, it's working. Now the third part is that 10 atm 300 Kelvin. It is at 10 atm 300 Kelvin. Okay. Now we have the change. We have the pressure. We have changed the pressure, and we have the data at 1 atm. We have to find the data at 10 atm. As we know that enthalpy change at P2 is equals to enthalpy change at P1, and the condition is very necessary. Ideal gas. For ideal gas, as we have not given that it is real, so we will we will we will assume it as ideal gas. So we have change in enthalpy at 10, which is equals to enthalpy 50 kilojoule per mole. Now we have to find the change in enthalpy at P2 minus change in enthalpy at P1, which is equals to change in number of gaseous mole R ln P1 by P2. Change in number of gaseous mole minus 1 R ln P1 by P2. P1 is 1 upon 10, which is equals to R ln 10. Now we will put this data. Delta GR is equals to 50 minus T, temperature is 300, into sorry, we have to add this here, which will be equal to change in enthalpy minus 50 plus R ln 10 upon 1000. Okay, let's move to the fourth part, which is 10 atm and 600 Kelvin. atm and 600 Kelvin. Okay, it's hot. It's November and the cold has yet not come. Okay, now this is sort of a good question, but not so good. Every question is easy and hard. It depends upon your perspective, how you can see the question. Okay, let's first find the change in enthalpy at 600 minus change in enthalpy at 300, which is equals to delta CPR, which is equals to minus 10 T2 minus T1 300, which is equals to minus 3000. So we have the enthalpy at 600, which is equals to 47 kilojoule per mole. We have taken out this in the last actually last to last part. And we have to change out the Gibbs energy at 600 Kelvin comma 10 atm minus change in Gibbs energy at 300 comma 1 atm, which is equals to delta Cp R ln T2 by T1 plus delta Ng R ln P1 by P2, which is equals to delta CPR. We have delta CPR minus 10 ln
T1 by T2 600 upon 302 plus change in number of gaseous mole minus 1 or C delta G R. Okay. Minus 1 R ln P1 by P2 1 by 10. So delta change in Gibbs energy at 600 comma 10, which is equals to, we have to take it there, what it was, minus 50 and this will be minus 10 ln 2 plus R ln 10. Okay, we have now the enthalpy at 600, change in energy, Gibbs energy. Now let's put it in. Huh? Oh, what the? I have by mistakenly written here Gibbs energy. It is entropy. Sorry, so sorry. Change in Gibbs energy is equals to change in enthalpy 47 minus temperature is 600 minus 50 minus 10 ln 2 minus R ln 10 upon 1000. Okay, sorry, this is the fourth part. I forgot to change the numbering. Okay, we got it. Actually, this is positive. Now let's move to the next part. Next part is relation between change in Gibbs energy and non-PV work. This is a part which take me a while to understand, more than a while, but it is easy. Everything is easy. Okay. Relation between delta G and non-PV. Okay, we have Gibbs energy. Change in Gibbs energy is always less than equal to 0, because only then the process will be feasible, will happen. If it is greater than 0, then the process will not happen. And we have one more thing, that Q by T should be greater than or equals to change in entropy. Okay. Q should be greater than or equals to T ds. We can write Q as delta U minus work done by PV minus work done by non-PV should be greater than or equals to T delta S. Taking the rate here, delta U minus work done by PV minus T ds should be greater than or equals to work done by non-PV. Okay, at constant, let make here delta not del. Okay, du at constant temperature pressure, du minus pdv minus tds d. Let's make it more clear. Du minus dpv minus tds is less than equals to work done by non-PV, work done by non-PV. Okay, it is constant, so we can take it inside the differentiation.
U minus PV minus TS. Okay, okay. H is equals to U plus PV. Oh yeah, I'm missing it. Oh, what? Okay, okay, I'm missing it here. Oh, that's why. Work done is minus PD, so here it should be positive. What is this? This is equals to H minus TS, and which is equals to Gibbs energy. So change in Gibbs energy should be greater than or equals to work done by non-PV. Okay, let's make both side negative. We This is a mathematical derivation of some sort of result which will help us in our numericals and in thermodynamics mainly. Okay, negative of change in Gibbs energy is greater than or equals to work done by non-PV by the system. By the system. To the work done by the system, non-PV work done. Uh, the maximum non-PV work done that can be done by the system is equal to negative is equals to change in Gibbs energy. This is here change of Gibbs energy. It is changed because Gibbs energy decreases, so it is the decrease of Gibbs energy. Yes. Okay, let's make this result on go. Remember this result. So what was our result? Negative work done by non-PV by the system. Okay, for reversible change in Gibbs energy is equals to work done by non-PV by the system, and for irreversible change is greater than equals to work done by non-PV by the system. This is sort of a derivation of a result which we will use further. Here we can say a statement that decrease in Gibbs energy is the maximum amount of non-PV work done by the system. Decrease in Gibbs energy is the maximum amount of non-PV work by the system. This statement is statement. It is important because it relates Gibbs energy with non-PV work. Okay, now let's take an example. Suppose this is a system. Temperature is equals to 400 Kelvin. Pressure is equals to 1 atmospheric pressure, and let a chemical reaction happen here.
and the change in entropy of system is minus 50 joule per Kelvin, and the heat release here minus 100 kilojoule. Here also kilojoule, minus 15 minus 100, sorry, here it is joule. Okay, let's find the change in entropy of the surrounding. Change in entropy of the surrounding is equals to Q surrounding by T. One more step which I forgot. Gibbs energy. Gibbs energy is a state function. Okay. Q surrounding is upon temperature minus 100 into 1000 upon temperature 400, which is equals to 250 joule per Kelvin. If we add this, the change in entropy of universe is greater than 0. मतलब this process is feasible in finite time. Okay. Now let's find the change in Gibbs energy. Change in Gibbs energy is equals to change in enthalpy minus T delta SR. Temperature is constant here, and let's move change in enthalpy minus 100 minus temperature 400. Change in entropy. Change in entropy of system. What is change in entropy of system? Minus 50 upon 1000, which is equals to minus 20, which is equals to minus 80 किलोजूल. ये जो है ये माइनस 20, तो माइनस 80 किलोजूल. ओके, वी गॉट द गिब्स एनर्जी. ठीक है. ओके. Okay, let's think that this process is reversible. If this process is reversible, then change in entropy of universe is 0. So change in entropy of surrounding is equals to 50 joule per Kelvin. And we can also write this as Q surrounding by T. We have temperature here 400 Kelvin, so we get the Q surrounding as 4 into 50, 20 kilojoule. 20 kilojoule. Okay. So, actually this should be okay. So what we can take out from here is that this is the system. Some reaction is taking place here, and it is giving out heat of 100 kilojoule. Okay, and this okay, this is separating into two parts. One is the change of entropy, Q surrounding, and this is the Gibbs energy. This is giving out heat which is separating into two parts, 20 negative of 20 kilojoule and negative of 80 kilojoule. Okay. So what we can find here?
We have in the previous page we have derived that negative of is the maximum change of Gibbs energy is the maxi is the maximum work done by non PV by the system. This is the maximum change in Gibbs energy. So this is the maximum non PV work that can be done by the system. That's why this is also known as Gibbs free energy. Okay. Okay, let's end this here, and I will meet you in the next video with the relation between delta G in reaction and K equivalence. Thank you. Cause they were running